motivation. It ain't fair, but I feel like we the nation. So raise the flag and do the preparation. Welcome to reality, there's no way back. Welcome to reality. Can't fuck with that. Hi everyone, this is Dr. Akash Mangukiya and I have just given FMGE June 2022 exam in which I have gotten 185 out of 300. In this exam, only 10% of the people are managed to pass, but in this exam I have passed. सो आई एम रियली ग्लैड. सो इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि जो मैंने अपनी एग्ज़ाम के दौरान यूज़ की थी. सो आप ये वीडियो पूरा देखें और समझें कि मैंने कैसे अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ की और मैं ये 10% लोगों में आता हूँ कि जो पास हुए इस एग्ज़ाम में. और आपको भी अगर पास होना है तो आप भी ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं अगली आने वाली दिसंबर 2022 FMG एग्ज़ाम के लिए. So बिना किसी रुकावट के let's get straight into the video. So first of all let's just talk about that when I came to India. I came to India in January 2022 पर मेरी प्रिपरेशन बहुत सी कम थी. मैंने 2 और 3 ही सब्जेक्ट मैरो में से किए थे और मेरी प्रिपरेशन बहुत ही लेस थी. बट मैंने अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू की? मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की after 14th of January, after Makar Sankranti, because I just wanted to give a little time to myself, because I just wanted to get into that mental state for preparing the exam. और मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो. मैंने अपने आप को 10 से 15 दिन दिए अपने ये एग्ज़ाम के मेंटल स्टेट में घुसने के लिए. So I have prepared nothing in these 10 days and I have started preparing for my exam dedicatedly after 14th of January. अब मैं आपको बताऊँगा मैंने कौन से सोर्स यूज़ किए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. So मेरा primary source, main source was marrow. Primary source was marrow. Every subject I have done from marrow. And then I have used prep letter 2 for only one subject and that is medicine. क्योंकि डॉक्टर मारवा के अलावा कोई भी मेडिसिन अच्छा नहीं पढ़ा सकता, मेरा मानना ये है. और वो पढ़ाते हैं हिंदी में और उन्होंने अपने वीडियो में भी बोला है ज़्यादा अपनी एक्सप्लेनेशन भी और ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं दे सकते. तो ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने हिंदी वीडियो में दिए हैं. प्रेप राइटर ने ये अनाउंस किया था कि वो 20 या 21 दिनों के लिए मेडिसिन के सब्जेक्ट मेडिसिन का सब्जेक्ट फ्री रखने वाले हैं. तो वो 21 दिन का मैंने फ़ायदा उठाते हुए वो 21 दिन में मैंने अपना मेडिसिन ख़त्म कर दिया. और मेरे टर्शरी सोर्स वाज लाइक 1 or 2 वीडियो फ्रॉम हियर एंड देयर एंड फ्रॉम यूट्यूब एंड दैट वाज आल्सो लिटिल हेल्पफुल. सो यही सारा सोर्स रहा है मेरी मेजर प्रिपरेशन के लिए. फर्स्ट प्राइमरी प्रिपरेशन वाज मैरो, मेजर प्रिपरेशन मेडिसिन फ्रॉम प्रेप लैडर और 1 या 2 वीडियो मैंने यहाँ से देख लिए, यहाँ से देख लिए और यूट्यूब में से कोई वीडियो देख लिया. और ऐसे करके मेरे ये 3 सोर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. यू कैन चूज वॉट एवर सोर्स यू वॉन्ट टू बट जस्ट स्टिक टू वन सोर्स. इफ यू हैव टेकन प्रेप लैडर जस्ट स्टिक टू इट. इफ यू हैव टेकन मैरो जस्ट स्टिक टू इट. और इफ यू हैव टेकन एनी अदर कोचिंग और एनी अदर ऐप जस्ट स्टिक टू इट. They are teaching good. If you just stick to it, you will pass. So the first thing that I did was making a schedule. I have made an excellent schedule subject wise, but my pace and my consistency was constant. So I didn't get lagged behind from the schedule. I was always on the time. कोई 1 और 2 बार मैं 2 और 3 दिन पीछे रह गया हूँ, पर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाकर वो 3 दिन और 2 दिन कवर कर लिए. और मैंने सब सब्जेक्ट का स्केड्यूल ऐसे बनाया था कि वो सब सब्जेक्ट मैं पर्टिकुलर दिन में कर दूँ. मैंने अपनी अगली वीडियो में भी कहा है कि अगर आप अपने दिसंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब फर्स्ट रीड 90 डेज में ख़त्म करना है. 90 डेज इज़ अ लॉट्स ऑफ डेज. ये 90 दिनों में आप सभी 19 सब्जेक्ट एक बार तो देख ही सकते हो. सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये 90 डेज में आप ये सब्जेक्ट देखो. मैंने 19 सब्जेक्ट इन दिनों में ख़त्म कर दिए थे. मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर लिख दूँगा. आप वो वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कैसे 19 सब्जेक्ट का पूरा फर्स्ट रीड पर्टिकुलर डेज में ख़त्म कर दिया. अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पहले मैंने एनाटॉमी किया, बाद में जैसा कि मैंने पहले कहा मैंने मेडिसिन किया फ्रॉम प्रेप लैडर. लाइक आई हैव टेकन 21 days फॉर मेडिसिन. I have never taken that much day for any subject. I have given 21 days for medicine only.
Then I have done surgery, OB-GYN, PSM, pathology, pharma and etc. smaller subjects. So आप ऐसा schedule बनाए कि ये सब subjects आप 90 दिन में ख़त्म कर दें. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैंने particular days में अपना first read ख़त्म कर दिया था, तो वो फर्स्ट रीड मैंने एंड ऑफ द मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पूरे 19 सब्जेक्ट ख़त्म कर दिए थे. सो बाद में ये फर्स्ट रीड ख़त्म करने के बाद आपको अपना फर्स्ट रिवीजन करना है. और अगला क्वेश्चन देखें तो हाउ लॉन्ग फॉर फर्स्ट रिवीजन. सो आई हैव टूक अराउंड 1 month फॉर माई फर्स्ट रिवीजन. आई हैव स्टार्टेड माई फर्स्ट रिवीजन बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टिल 3rd of May. और ये डेट मैं एग्जैक्ट कह रहा हूँ क्योंकि फ्रॉम 4th May आई हैव मेड अ पर्टिकुलर डे स्केड्यूल. मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लास्ट मंथ का स्केड्यूल मैंने कैसे बनाया और ये स्केड्यूल आप भी बना सकते हैं. सो सेकंड एंड थर्ड रिवीजन हाउ आई डिड एंड व्हेन आई डिड एंड दैट आई एम गोना शो यू इन माई स्केड्यूल. और मैंने अपना स्केड्यूल फ्रॉम 4th of May से स्टार्ट किया था. जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 मिनट में अपनी दूसरी पेन चूज़ कर लेता हूँ. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पहला दिन है, जो पहला दिन वो 4th of May है. मैंने अपना सेकंड रिवीजन 4th of May से शुरू किया था. और ये सारे सब्जेक्ट्स के जो आप दे सकते हैं, पीडिया एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, डर्मा, बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, this is RV means revision videos. All these subjects I have written when I was making schedule on 3rd of May. ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने अपना स्केड्यूल बनाते वक्त यहाँ लिखे हैं, ना कि जब मैंने ये सब्जेक्ट्स कर लिए और बाद में यहाँ लिखे. नहीं, पहले मैंने ये स्केड्यूल बनाया, बाद में ये सब सब्जेक्ट्स मैंने डे वाइज किए हैं. I have not made any changes in this schedule except 1 or 2 like last week of schedule. Other than that, I have not edited this schedule after 4th of May. So this is how my final month looked like. So 4th of May to 4th of June, this is exactly 1 month schedule. You can follow this schedule or you can make your own schedule like this. And I will explain you how दिस ऑल टर्मिनोलॉजीज आर. तो ये RV का मतलब है कि मैंने यहाँ रिवीजन वीडियो किए है और मैंने यहाँ रिवीजन किया है. और ये जो आप देख सकते हैं कि QB मीन्स आई एम डूइंग क्वेश्चन बैंक्स. आई एम डूइंग क्वेश्चन बैंक्स every single day. As you can see, question bank. I have not skipped one day for question bank except for these days 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. These days I have not done question bank because I had to do second revision very quickly. So this is all my second revision and third revision, and I have mostly covered all the subjects, and I have covered big marks covering subjects like, as you can see here, medicine, then surgery, then OB-GYN, then community medicine. Only these 4 subjects, as you can see, medicine, surgery, OB-GYN, community medicine. This I have done particularly. I was focused on these subjects more than other subjects because I knew if I have done these subjects perfectly, then most probably I can get 80 marks out of 120 because these all 4 subjects contain 120 marks. And if I get 80 marks out of this 120, I can easily pass. So further we talk about this schedule. Then I have started doing images. As you can see here, images. I'm putting extra focus to images. And one more thing, if you have noticed, I have written this 2, 3, like little 2, 3, 1, 5. This is all the hours that I'm putting into it. Like this is 5 hours, this is 2 hours, this is 5 hours, this is 2 hours, this is 3 hours, this is 5 hours again, this is 3 hours. And I have written every single detail in this schedule. As you can see that this is 5 hours. And every, what is this, Sunday, Saturday? Okay, this is every Sunday I'm giving one grand test, exam. So this is every Sunday I was giving one grand test. And only in the exam week I have not given any grand test. Other than that, I have given 1, 2, 3, 4, 1 I have not written, 4 grand tests totally, and 1 test from the marrow. So totally I have given 5 grand tests before the exam. Here was the marrow exam.
So now let's just talk about the last week of the exam. Like I have told you in my previous video that I have done all 19 subjects in last 1 week of the exam. As you can see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. All 19 subjects in 7 days. So this is how I used to do all 19 subjects. When I was doing my first read, I used to write or I used to do a star on the topic that this topic is important. So I have done the star on the topic, so I know that this topic is important and from this topic they can ask the question. So I have done those stars. When I'm going to second and third revision, I have read all the stars first and then all the revision of that subject. And in the last week of the revision, I have only done the stars. I have not touched any unrelated stuff from the subject. I have only done the star. I was only focused on high yield stuff. And as you can see, I have also done the questions. These Qs are PYQs. These Qs are PYQs. This is not question banks. In last week you have to do PYQs because अगर लास्ट वीक में आपने PYQs किए हैं, वो PYQs आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएंगे कि वो आपको एग्ज़ाम में याद आएंगे ही. ऐसा बन ही नहीं सकता कि वो PYQs आपको एग्ज़ाम में याद ना आए. सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि PYQs एक बार लास्ट वीक में देख लो, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. Now let's talk about the day before the exam. On day before the exam, I had to travel because I'm living in Surat and I had to go to Ahmedabad to give my exam. And that day was journey for me, and that also I have written in the schedule that I'm gonna do journey on that day. And also I have written here SS on the day before exam. As you can see, let me do a little up. So this SS means screenshot. When I was putting the star, that topic was high yield, I knew it. But when I was doing my last week of revision, so ये last week में जब मैंने ये वो स्टार वाले टॉपिक पढ़े, तब मुझे कुछ टॉपिक अपने दिमाग में घुस नहीं रहे थे. तो मैंने ये किया कि वो टॉपिक के स्क्रीनशॉट ले लिए. वो टॉपिक मैंने अपने लास्ट डे के लिए संभाल के रखे कि ये टॉपिक मैं अपने लास्ट दिन में करूँगा, तो वो अपने दिमाग में घुस ही जाएगा. अगर एग्ज़ाम के बाद मैं भूल भी जाऊँ तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो एग्ज़ाम में मुझे याद है. तो वो टॉपिक का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और लास्ट डे के लिए मैंने संभाल के रखे. जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में सारे एंजाइम के स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए और वो कैंसर स्टेजेस के मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे. और एक कैंसर स्टेज का एक क्वेश्चन भी था, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर का स्कोरिंग सिस्टम क्या है, और वो स्कोरिंग सिस्टम मैंने अगले ही दिन पढ़ा था, इसीलिए मुझे वो याद आ गया एग्ज़ाम में. सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी टॉपिक आप अपने दिमाग में घुसा नहीं पा रहे, वो टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो. वो टॉपिक ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 20 और 30 हो गए तो चलेगा, बट नॉट मोर देन 50 बिकॉज यू कैन नॉट रीड 50 टॉपिक्स इन वन डे. आप वो 20 और 30 टॉपिक के स्क्रीनशॉट लेके लास्ट डे पे पढ़ सकते हो. और मेरी जर्नी में वो 20 और 30 टॉपिक मैंने पढ़े और वो टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस भी आए और वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा. एंड आई हैव ऑल्सो रिटन दिस PYQs. Those PYQs where I was doubting myself that I will probably make it wrong, those PYQs only I have done on the last days. And overview of the medicine, surgery, OB, community medicine and biochemistry, because biochemistry was my weakest subject, and all those 4 subjects which contain more marks, I have just done the overview of it. I didn't put so much effort to remember it because I knew that I cannot remember on last day. Whatever I have done it. That's it for me. Tomorrow morning I'm gonna go and give the exam. And also I have wrote other extra things, as you can see here, that this is extra things, like this is pics from first aid. I have done pics from first aid for micro. In first aid they have given every pic for micro, so I will recommend you to do all the pictures for micro from first aid. So I have done that toxicity antidote from first aid too. मुझे एक ये प्रॉब्लम है कि मैं ल्यूकीमियास को याद नहीं कर पाता,
कितना भी, अगर आप अभी मुझे पूछ लोगे कि ल्यूकीमियास मुझे बता दे कि ये ALL कौन सा है, CLL कौन सा है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे ल्यूकीमियास याद रखने में बहुत ही प्रॉब्लम है। सो मैंने ल्यूकीमियास अपने एग्ज़ाम के डेस्टिनेशन जाते वक्त मैंने पढ़े सुबह सुबह। बाद में मैंने मेडिसिन का एक ओवरव्यू ले लिया, कि मैंने आपको बताया कि मैंने मेडिसिन का ओवरव्यू अगले दिन ले लिया। बाद में क्वेश्चन पेपर्स, जैसा कि आपको बताया, PYQs। Then also I have done the images, questions, exams, and this is the most important thing for your exam preparation. This is the most important thing. You have to put hours. You have to put hours in this. 10 hours minimum, 15 hours maximum. So I was putting 12 hours average. So I was putting 12 hours average every day, no skipping of any day. I was putting 12 hours every day. Then only I got this result. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्केड्यूल में मैंने बहुत सारे ब्लू हाईलाइट किए हैं। वो ब्लू हाईलाइट दिखाता है कि मैंने वो दिन में जो भी पढ़ना था वो मैंने कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी दिन जो भी मुझे पढ़ना था वो मैंने कर दिया, क्योंकि मैं अपने प्रिपरेशन को मिनिमम 12 आवर्स दे रहा था, इसीलिए मैं ये सब कर पाया। अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ लॉन्ग आई वॉज स्टडिंग. So this question I will answer in 3 parts. Initially when I was doing my first read after 14th of January, I was giving 4 hours, 5 hours, then I progressed to 8 hours. Believe me, I was stuck on 8 hours when I was doing medicine. Then I thought myself that is 8 hours is really gonna get me marks that I want? And answer came no, I will not get marks that I want in 8 hours. So I progressed to 12 hours from 8 hours in my first revision. In first revision I was doing 12 hours of studies every day in April month, from starting of April until 3rd May, that I already told you that my first revision was that period. So I have progressed it to 12 hours. Then on exam week I have given my everything, like from 12 hours to 15 hours. Not only 12 hours, I was giving 12 hours to 15 hours between that. Maybe I have reached 15 hours only 2 times, but not more than that. I have never given more than 15 hours in an entire day. And believe me, studying for 15 hours is really hectic. It just feels good to think about it, but if you're starting to do it, you will remember everyone from like your mom to I don't know what. So 15 hours is really hard. And I would also suggest you guys to start your preparation from less hour to big hours. Let's say कि पहले ही दिन आप अपने स्टडीज़ को 12 घंटे दे रहे हो, दूसरे दिन 12 घंटे दे रहे हो, तीसरे दिन 12 घंटे दे रहे हो. Believe me, on 4th day you won't study for 12 hours because your mind will get tired of it, because you are giving more hours from initially and your mind is not ready for that. So आपको अपने दिमाग को हैबिट लगानी पड़ेगी पढ़ने की. इसलिए मैं कहूँगा कि पहले कम से शुरू करो और बाद में ज़्यादा की तरफ बढ़ो. पहले कम करो, आपको दिमाग को आदत डालो कि मुझे हर रोज़ पढ़ना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, तभी आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठ सकते हो. अगर आप पहले ही दिन ज़्यादा घंटे के लिए पढ़ोगे, आप 4-5 दिन में थक जाओगे. बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम लेस आवर्स टू बिग आवर्स. सो अभी आगे बढ़ते हैं कि काउंट योर एग्जैक्ट टाइम. सॉरी, आई हैव रिटन एग्जाम. सो दिस शुड बी exact time. So you have to count your time exactly, like from 1 minute to minute you have to count. So one thing you can do that, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं अपने लैपटॉप में टाइमर शुरू करके रखता था. जब भी मैं स्टडी अपनी शुरू कर रहा हूँ, मैं स्पेस दबा के टाइम शुरू करता हूँ. जब भी मुझे पानी पीने जाना किचन में, तब भी मैं पॉज कर देता हूँ टाइम को, और जब भी मैं वापस आता हूँ और स्टार्टिंग टू स्टडी, आई विल start it back again. So your every minute should be counted, and that's how I have done 12 to 15 hours. Believe me, that is so hard to reach to 12 hours or 15 hours by doing this. When you progress to the day,
it will slowly increasing like 1, 2, 3, 4, 5. You will get tired. You will get tired to see it that when it will reach to 12 hours, when it will reach to 13 hours. But your focus should be in your studying. Your focus should not be on the screen that how much hours that already been passed. Your focus should be in studying. It will pass away very very fast. If believe me, you won't even see that where the time went. So you have to go with the time. Count every minute that you are putting into this. Put your blood and sweat. I have already told you that you have to put your blood and sweat, and believe yourself that you will pass. If you don't believe yourself that you will pass, no one can help you. See yourself you are passing. Believe it, then only you will pass. If you believe it, you will do hard work to achieve it. So I want you to believe yourself that you are passing it. And last thing I wanted to show this. In Marrow Instagram, they have put my pic on their Instagram feed, and believe me, this is so great feeling to see my photo on their feed, because that was one of my goal, that I wanted to be in their feed, or I wanted to be in the interview with Marrow faculty. But I couldn't achieve the interview with Marrow faculty, but I got the picture of myself in Marrow page. So I'm really proud of it, and you also should be proud of yourself. If you have not started preparing, then start preparing. If you are preparing already, then all the best to you. I will see you in the next video. Until then, stay safe. Bye bye. Study hard.